square root mainly. How to find square root? First we have to notice that whenever यूनिट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन और स्क्वायर रूट में जो नंबर है उसकी इज 1, आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी और 9 होगी. सिमिलरली इफ यूनिट डिजिट इन क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट गिवन है उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो आंसर जो होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 और 8. हाउ? आई हैव टोल्ड यू. नाउ इफ यूनिट डिजिट इज 9, आंसर की यूनिट डिजिट विल बी 3 और 7. So now we can use this to find our answer. So 4 square is what? 16. So square root of 36 is 6. So we can say that if unit digit is 6, we can have answer ending on 4 or 6. So that can be used to find solution of a square root of a bigger number. How we can find it? Let me explain. So first we will be find out 25921 का square root. What will be the square root? First we have to consider the last 2 digit only. Then we will see that unit digit is 1, so we can have 1 or 9 as the answer unit digit. Now we have to consider this number is between 15 square is what? 225. 16 square is what? 256. So it's between 16 and 17. So we know it is very closer to 16. हमेशा जो होगा हम जो नंबर लेंगे वो लेंगे 16, जो भी छोटा वाला होगा हमारा इन दोनों में से 16 और 17 में जो छोटा होगा वो ले लेंगे हम. उसके बाद में हम देखेंगे 16 का स्क्वायर या फिर 256 या फिर 17 का स्क्वायर. दोनों में से क्लोजर कौन है? 289. Which is closer? This one is closer. So our answer will be this one. If it is closer to this one, our answer will be this one. In that case 161 is our answer. We will try to find out few more square root to understand it better. So now we have to find out square root of 21904. So as I said, we have to consider last 2 digit and then we will see the unit digit is what? 4, in which we can have 4 in the unit digit, 2 or 8. It can be 2 or 8. Now we will see the rest of the part that it lies between 15 square is what? 225
So 14 square is what? 196. Always we will consider the smaller value, जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम कंसिडर कर लेंगे. सो वी हैव गॉट 142 एंड 148. इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. सही आंसर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे दोनों में से किसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू है. 219. 219 सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट किसके, इसके है. सो आंसर विल बी दिस वन. जब बड़ी वैल्यू क्लोजर हो तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटी वाली वैल्यू हो तो छोटा आंसर होगा. सो आंसर विल बी 148. वी नो हाउ टू फाइंड इट, सो वी कैन फाइंड आउट. 148 का अगर अभी स्क्वायर निकालना हो, हम स्क्वायर निकाल के एक बार देख लेते हैं कि है या नहीं है. 14 स्क्वायर इज व्हाट, 196. Now we will multiply 14 into में 16. 4 2 2. Two 1904 is the square of 148. We have also find it out. We will also try to have one more question. So in this question we will take 2 4 3 3 6. We have to find out square root of this number. So we have to look at the last two digit. Last digit is 6, so it can be 4 or 6. Between whose value, 15 का square is what, 225, and 16 का square is what, 256. So it lies between these, and which of these are smaller, we will write 15 is the smallest number, so 154 or 156. इन दोनों में से किसी एक का it will be a square of any of these two numbers. We always consider the smallest number which is the square in between. In 243 is in between these two numbers. So 243 is closer to which one, that will give us the answer. If it is closer to this, so our bigger one will be answer. If it is closer to this, our smaller one will be our answer. So in that case the difference is close to this. We can subtract it. 13 and 243 में 22. No, it will be 18. So it is closer to this. So 156 will be our answer. That's how we can find out square root of any number. Thank you.